interesting story. जी What do you do at Haridwar? हम हुजूर पढ़ाते हैं, हम प्रीस्ट हैं हुजूर, पढ़ाते हैं वहाँ जो ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पढ़ाते हैं हुजूर. He is ready to marry you. यस. नो माय लॉर्ड, एक्चुअली हुजूर ये यही सब करते ही हैं. हम काहे के लिए इनसे शादी करेंगे? The petitioner is in the habit of defrauding young women with the same modus. इसमें हुजूर एक लाइन और लिखा दिया गया है. अभी भी ये थ्रेटनिंग देते हैं कि हमरा बेल होने दो, उसके बाद तुम्हारा फोटो डाल देंगे नेट पर. Application for anticipatory bail for offence under section 354D, 509, 504, 506 of the Indian Penal Code, as well as 66E and 67 of the Information Technology Act. Not the perusal of the FIR itself, Lord, demonstrate, and that would be my submission, Lord, that would not quite manifest that, Lord, it is the petitioner who is always, Lord, helpful to, Lord, the informant, but due to some reasons and ulterior motive the FIR has been instituted. That is quite reflected from the FIR. Lord, may I read the FIR, Lord? Just give me 1 minute. Yes. जी. Very interesting story. हाँ, वो हमने किसी को मोबाइल पर कोई फोटो नहीं भेजा हुजूर, मेरे मोबाइल पर फोटो आया, जो कि ऐसे ही पता चलता है हुजूर. हम पढ़ते 2-3 पोर्शन FIR का केवल पढ़ेंगे. फर्स्ट पेज का हुजूर, पेज नंबर 13 पर हम लोगों के साथ मंदिर में कई फोटोग्राफ भी लिए, वो जनरल फोटोग्राफ. इस दौरान मैंने एक नया मोबाइल सैमसंग सोर्स प्राइम, जो कि मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे आनंद कुमार के नाम से खरीदा. ये दोस्त के बेटे के नाम से, मैंने पिताजी के दोस्त के बेटे के नाम से मोबाइल उन्होंने खरीदा, जिसके 15 दिनों के बाद ही उन्होंने अपने पुराने फोन से मेरा नया मोबाइल बदल लिया. मैंने इनका मोबाइल बदल लिया, जो कि इनके पिताजी के दोस्त के बेटे के नाम से. जी. What do you do at Haridwar? हम हुजूर पढ़ाते हैं, हम प्रीस्ट हैं हुजूर, पढ़ाते हैं वहाँ जो ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पढ़ाते हैं हुजूर. आई एम ए प्रीस्ट. और हम अब उनके पिताजी भाई सबको ले गए वहाँ पर. हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है. हम अभी भी इंसिस्ट कर रहे थे मैरिज के लिए. फोटोग्राफ आने के बाद हम क्वेरी किए CBK मैंगनी, वो जो Are you ready? आई एम रेडी. अगर वो तैयार है, वो तो खुद ही FIR में कह रही है हुजूर कि हम मैरिज के लिए बोले. ये मतलब दिस पिटिशनर आस्क फॉर द मैरिज, लेकिन ये टाली कि हम अभी पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे. डिस्पाइट हैविंग रिसीव्ड द फोटोग्राफ्स, हमने पूछा केवल, तो वो CBK मैंगनी एंड लॉज द FIR. Am I still ready? हमको कोई ये नहीं है हुजूर, हम तो उनके भाई फादर सबको ले गए, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, मेरा कोई एंटीसीडेंट भी नहीं है. What is the age of the woman? मेरा एज जो informant. Yes, madam. Informant. I am for informant, madam. Yes. इसमें हुजूर पिटीशन का कॉपी हमको नहीं मिला है. एक्चुअली इसमें है क्या कि ये मेंटेनेबल एंटीसिपेटरी बेल हुजूर है ही नहीं, टोटल बेलेबल सेक्शन है. नहीं. हाँ. IT एक्ट का जो है 3 साल है हुजूर, जो 3 साल है, वो CRPC IT एक्ट में हम एग्जामिन कर चुके. जी. IPC का सभी सेक्शन का 2 इयर्स है, लेस देन 3 इयर्स है, इसलिए वो अवेलेबल है. 354D अवेलेबल नहीं होगा. उसमें है क्या हुजूर कि फर्स्ट ऑफेंडर के लिए अवेलेबल है. 354D अवेलेबल है हुजूर. जी. IT एक्ट का जो 66E और 67 है, उसमें 3 इयर्स है. और CRPC का जो टेबल बना हुआ हुजूर, वो 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स के लिए वो जो नॉन अवेलेबल है. Why can't you go and surrender? All लेकिन अवेलेबल नहीं ना हुजूर, वो IT एक्ट वाला अवेलेबल नहीं है, वहाँ देगा थोड़ी हुजूर. वो मेजर ऑफेंस तो है भी नहीं ना. नहीं, लेकिन इसीलिए तो हुजूर के हम आए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट किनारे पर है अवेलेबल नॉन अवेलेबल के. लेकिन चूंकि वो अमेंडमेंट में वो हो गया है नॉन अवेलेबल. पहले 3 इयर्स तक का था कि अवेलेबल है. He is ready to marry you. Yes. नो माय लॉर्ड, एक्चुअली हुजूर ये यही सब करते ही हैं. हम काहे के लिए इनसे शादी करेंगे? Heard Mr. Vindhyachal Singh, learned senior advocate for the petitioner, and Mr. अरुण कुमार झा. And Mr. Arun Kumar Jha for the informant. The state is represented by Mr. Narendra Kumar Singh. The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with so-and-so. A long drawn story has been narrated in the first information report. The informant / prosecutrix appears to have come in contact
with the petitioner on telephone. First of later, the petitioner agreed to marry her and also provide employment to her brothers and father at Haridwar. First of later, the father of the prosecutrix found the behavior of the petitioner cringeworthy as he was making his minor sons work severely. Used to make his minor sons work unnecessarily. Later, the petitioner he took some photographs of the prosecutrix which was threatened of being put on social media. The appellant counsel for the petitioner has submitted that the entire accusation appears to be absolutely false and motivated. The petitioner had provided help to the family of the prosecutrix by taking her father and her brothers to Haridwar so that they could get some employment for running their family. He has further submitted that even today he is ready for contracting marriage with opposite party number 2, but for some reason or the other, the opposite party number 2 informant, but for some reason or the other, the informant now has decided not to continue with the relationship. Learned counsel for the petitioner has submitted that all the offences under the IPC are bailable, and the offences under section 66 bracket E and 67 of the IT Act do not appear to have made out from the facts of this case. Learned counsel for the informant, however, has submitted that the petitioner is in the habit of defrauding young women with the same modus. Learned counsel for the petitioner, however, has submitted that such bold accusation remains unsupported. There is no evidence to support such bold allegation of the learned counsel for the informant. Regard being had to the nature and circumstance, nature of the offence, regard being had to the background facts, the petitioner is directed to be released in the event of arrest to surrender 10,000. इसमें हुजूर एक लाइन और लिखा दिया गया है, अभी भी ये थ्रेटनिंग देते हैं कि हमरा बेल होने दो, उसके बाद तुम्हारा फोटो डाल देंगे नेट पर. Should the petitioner upload any picture of the informant on social media or threaten her and her family, threaten her or her family in any manner, it would be open for the informant to proceed for cancellation of the anticipatory bail grant.